teach you, your family and friends, and relatives about the awareness of your personal health and safety. Okay, so what role does consent play in the context of touch, and how can this be explained to children? The consent they are talking about is when the abuser is trying to take a consent of a child, or how do you have to tell them कि ये इसके consent का क्या role है? So whatever kind of context it is, whatever context में वो consent ले रहा है, it's not permissible. You teach your child that it's not permissible. If anybody is asking you about any sort of touch, whether it's good or bad in terms of hug or kiss or anything, teach your child to say no to everybody for whatever type of touch they are referring to. Have a right to say no. Yes. Yeah. You have to teach your child to say no. What are the potential psychological and physical effects of experiencing a bad touch, and how can they be addressed? So it's a very confounding message for especially young children. The lasting effect that any bad touch can have on child can be really long. Actually, to term it as label it as post-traumatic stress disorder. So psychological effects on children for a bad touch is long term. To actually label it as post-traumatic stress disorder, it can take really long for one to recover, and comes in forms of fear, agony, pain, and lack of confidence, inferiority complex, and to be actually be unable to cope with life in general. So yes, lasting effects are really detrimental for any child. To cope up with them, how as a parent, as a community is entirely a different context. Yes, as a parent you need to realize that your child has gone through certain thing. You need to talk to them, you need to address the issue, and you need to teach them about what to learn from certain situation, and yes, ensure enough of confidence in them using healthcare system, the experts in our healthcare system as well, and teaching using the mediums like teaching and obviously out with love. Dr. Anna, what do you have to say? हम ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया को जो हम करते हैं, बच्चे यूट्यूब यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी प्राइवेसी चेक करें, पेरेंट्स एक्सेस हो एक्सेस, तो कि वो क्या देख रहे हैं, उनकी पहुँच कहाँ तक है, तो आप ये करें। साथ अपना हाउस इन्वायरमेंट आप बहुत अच्छा बनाएं, बगीचा सा, कि उनको एथिक्स बनाएं, डेली बेसिस पे उनको कोई ना कोई लेक्चर तो नहीं है, सच कोई टेबल टॉक करें, ठीक है, फैमिली टाइम उनको कोई ना कोई एथिक्स मिल जाए। यही एक तरीका है जिससे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारा घर सेफ़ है बच्चों के लिए, स्कूल सेफ़ है, पर सेफ़ नहीं है, ठीक है। हमारी मेड्स हैं घर में, स्कूल में टीचर्स वगैरह हैं, टीचर बहुत मुकद्दस है रिलेशनशिप, लेकिन ये है कि हर जगह पे आपने रिस्पेक्ट, हर जगह पे कोई ना कोई है ना इस तरह का, लेकिन बी केयरफुल। बच्चों को भी हमने ये सिखाना है कि आपने किसी के साथ किस लिमिट तक जाना है, ठीक है। तो मेड्स के कितने केसेस हैं ये चाइल्ड अब्यूज़ के, तो हमने फुल ट्रस्ट नहीं करके अपने बच्चों को उनके हैंड ओवर करते हैं, आप उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें। तो ये एक तरीका है कि हम उनको बचा सकते हैं अपने बच्चों, क्योंकि अगर बच्चे अल्लाह ना करे इस अच्छी तरीके में चलेंगे तो हम उनको निकालना भी उसको मुश्किल होता है, और हम खुद को हमें गिल्टी फील होगा कि हमारे होते हुए हमारे बच्चे के साथ ये हो गया। तो हम उनको अपॉलोजाइज़ करें, उनके साथ डिस्कस करें, उनको इस चीज़ से निकलने में हमने ही हेल्प करनी है। The most important thing here जो सबसे क्रूशल चीज़ है वो ये कि जो पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप ऐसा हो कि बच्चे वो कंफर्ट फील करें कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ये बात कर सकते हैं। जब आप when the environment that you built for your child is very strict and very very narrow and सख्त
किस्म का environment, and children will not never be comfortable telling you what they're going through, and there are high chances as a parent you are unable to realize कि आपका बच्चा किसी चीज़ से गुजर रहा है. तो I think सबसे ज़्यादा चीज़ पे जो उस पर काम करना चाहिए वो ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसा रिलेशनशिप दें कि वो आपको आपके साथ करने में थोड़ा आसानी फील करें. आप ट्रस्ट बिल्डअप करें ना उनके साथ कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें. मोस्टली अगर ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाता है ना तो बच्चों में को फेयर होता है कि अगर उन्हें बताया तो हो सकता है आगे पेरेंट्स उन्हें ब्लेम करें, उन्हें हो सकता है उन्हें डांटे. ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप करना है कि बेटे हमें Majority क्योंकि बच्चे बच्चों में इस ये confidence टॉपिक नहीं पे होता. कभी भी बच्चा इस टॉपिक पे झूठ नहीं बोलेगा. तो झूठ नहीं बोलेगा इस टॉपिक पे कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें. तो आपने यही उनके ऊपर आपने उनको शो ऑफ करवाना है कि बेटे आपने किसी भी बात पे हम आप पे बिलीव करेंगे. कोई भी आप बात करोगे हम आपके ऊपर बिलीव करेंगे. आप हर चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हैं. जो आपको फील होता है कि आप हमसे नहीं डिस्कस कर सकते या हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे वो चीज़ भी आप डिस्कस कर सकते हो. तो फैमिली बिहेवियर होगा पेरेंट्स का तो एब्सोल्युटली वो करेंगे शेयर. देखने में अगर जैसे यूट्यूब पे अगर हम देख रहे हैं आप तो कह रहे हैं एक्सेस होना चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अब जो बंदा खुद अब पेरेंट है, अब वो टीवी पे कुछ भी देख रहा है उसको लगे कि वो बच्चा नहीं सीख रहा उसमें से, आप ऑब्वियसली बच्चा वहाँ से गुजर रहा है वो कुछ सीख रहा है. तो मेरी ओपिनियन में ये है कि बच्चा सिर्फ अच्छा ना देखे, पेरेंट्स भी अच्छा देखे तो बच्चा तो ऑब्वियसली गुजरते फिरते देखेगा ही वो. तो अगर घर में कुछ अच्छा लगा हुआ तो बच्चा उसमें से सीखेगा. कोर्स अब मैंने आपको ये तो हाईलाइट किया है कि सोशल मीडिया आप अपने घर का इन्वायरमेंट बेहतर करें. सिर्फ बच्चों पे नहीं डालना. इस्लामिक इन्वायरमेंट जब होगा हमारे घरों में बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको टीवी पे लगा के दे देते हैं या वो हमसे सीखेगा. हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके कैसे चल रहे हैं. हम सुबह उठ रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चों हमें फॉलो करें. तो जिस तरह हम उनको लेके चलना चाहते हैं हमारा एक किरदार ही वो मैं एक लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने बोला था कि आप हम किस तरह तबलीग कर सकते हैं. तो वो कहते हैं हम खुतबे नहीं दे सकते, हम जाके उनके पास ये नहीं कह सकते कि जी आए हमारे साथ चलें. आप खामोश रहें, कुछ भी ना बोलें, सिर्फ परफॉर्म करें. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, सिर्फ अपनी लाइफ गुजारी और अच्छे तरीके से गुजारी और कहा कि बस मुझे फॉलो करते जाए. आई थिंक ये जो सोशल मीडिया का जो है ना जैसे आपने बात की कि हम पेरेंट्स अच्छा देखेंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे. आई थिंक ये दीज आर द थिंग्स दैट आर गॉन बाय गॉन, इट्स बीन पार्ट. तो ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा में जब स्कूल में होते हैं वहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं. सबसे ज़्यादा बच्चा आपको देखने से बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, जो- अच्छे बुरे. जो Very hard to सोशल say. मीडिया की अवेलेबिलिटी हो गई है ना इस इन चंद सालों में. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की बात कर लें और just talk about even Facebook. Every single person is using Facebook. छोटे बच्चा स्टार्ट कर दिया है, they've started using it like in a routine life. तो जो कंटेंट अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो चुकी है. यू नीड टू हैव फॉर एग्जांपल एज अ पेरेंट आई डोंट हैव टेलीविजन इन माय हाउस. तो वो तो बात ही खत्म हो गई ना कि आप टीवी पे क्या देख रहे हैं. पेरेंट्स टीवी ही नहीं देखते, टीवी है ही नहीं घर पे. ठीक है, आपके पास आपके फ़ोन की एक्सेस है, बट द कंटेंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन इन द फॉर्म ऑफ रील्स, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस, उसमें इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट है कि आपका बच्चा बहुत इजीली इफेक्ट हो सकता है इससे. बिकॉज ऑफ वेरी फ्री अवेलेबिलिटी यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस कि कौन सा कंटेंट अवेलेबल. आप इस पर नहीं कंट्रोल कर सकते. कोई सर्टन मूवी लगाई और यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू वॉच अ सर्टन मूवी विद यू नो the availability of the content, the vulgar content and the poor content, adult content is so easily available on simple ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं. तो इस पे आपका पेरेंट का स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखना बहुत बच्चों पे जरूरी नहीं है कि वो देख के कुछ भी लर्न करें. मैंने गिव माय एग्जांपल, मैं भी अगर कुछ देखूँ ना आई विल इजीली ब्रेन वॉश. मैं हो जाऊँगी सही में, क्योंकि जो एक वो वर्डिंग यूज़ करते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट, वो मीठी मीठी सी वर्डिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वी थिंक दैट द थिंग दे आर सेइंग इज राइट. तो बहुत इजीली हमारा ब्रेन वॉश हो सकता है इससे. the availability of the content, the vulgar content and the poor content, adult content is so easily available on simple ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं. तो इस पे आपका पेरेंट का स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस सिर्फ बच्चों पे नहीं है कि वो देख के कुछ भी लर्न करें. मैन आई गिव माई एग्जांपल, मैं भी अगर कुछ देखूँ ना आई विल बी इजीली ब्रेन वॉश. मैं हो जाऊँगी सही में, क्योंकि जो एक वो वर्डिंग यूज़ करते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट, वो मीठी मीठी सी वर्डिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि
वी थिंक दैट द थिंग दे आर सेइंग इज़ राइट, तो बहुत इजीली हम लोग ब्रेन वॉश हो सकते हैं उससे, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, बहुत आसानी से हो जाएगा।